Good morning, students. In political science, we are doing chapter number 9, which is called globalization. Okay, this globalization is somewhat different than what you studied in class 10. That was in economics, and we studied only about the economic aspects of globalization. Here, we are going to study not just the economic aspect, but also the political and cultural consequences of globalization. Okay. But first we need to understand what globalization is. Of course, you understand the coming of MNCs, connectedness of market, here पढ़ चुके हैं. But we talked about four flows. Okay, four flows are movement of goods. Okay, commodity जिसे हम बोलते हैं, goods and services. Movement of capital, movement of people and movement of ideas. ये four flows जब होते हैं, तो globalization होता है. But what is so unique? What is so distinct? इसमें novel idea क्या है? ये तो पहले भी होता था. Okay, we see that India became part of globalization in 1991. तो हमने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया? क्या हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया? लेकिन ट्रेड तो हम पहले भी करते थे. Okay, so if we see in earlier times also, ideas obviously used to travel from one part of the world to another part. We saw lots of ideas, okay, whether they were technological advancements or they were religious ideas, जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में गए, इनफैक्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए. बेस्ट एग्जांपल इज बुद्धिज्म. ओके, फ्रॉम इंडिया इट ट्रैवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूरोप came to Asia and other parts of the world. So we saw that trade used to take place. सामान पहले भी आता था. Goods हमारे यहाँ से यूरोप and यूरोप से हमारे यहाँ पर चाइना, इंडिया, it used to take place. Ideas used to be exchanged. Okay, capital, people used to invest. Britishers, they invested in India. Okay, so these flows, all these four flows, flow of ideas, flow of commodities, which is goods and services, अगर हम उसे कहें तो, and flow of people, labor, okay, from Africa to America, from India to other parts of the world, South American countries and Africa. So this had taken place even earlier. What is new? What is this new globalization they are talking about? Okay, so there's nothing new. These same flows are happening now also, but this is the most distinct part. Okay, it is the scale and speed. This is important. The scale and speed. इसका जो volume and जिस speed से ये flows हो रहे हैं. Okay, so it is the scale and speed of these flows. All four flows की बात हो रही है. That accounts for the uniqueness of contemporary globalization. तो अभी जो globalization है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी uniqueness किस चीज में है? पहले वाले ग्लोबलाइजेशन से ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग है. ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें स्पीड एंड स्केल बहुत ज़्यादा है. पहले तो कुछ ही सामान जाया करता था, बेसिक एवरीडे फूड मटेरियल्स, योर फूड, योर ग्रेन्स, योर वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स, वो नहीं आते थे दूर से. ओके, बट नाउ एवरीथिंग ट्रैवल्स, ऑलमोस्ट एवरी गुड्स. You imagine you are staying in any part of the world and everything reaches you. Okay, that is the strength of today's globalization. So it is the scale and the speed at which these four flows take place. वही uniqueness है इस वाले globalization में. इस globalization में, present day globalization में and that past globalization में जो difference है वो यही है कि अब ये बहुत large scale पर होता है and बहुत तेजी से होता है. Okay, so that is the uniqueness of globalization in the contemporary era. Globalization has a strong historical basis, नई चीज नहीं है वो. While globalization is not caused by any single factor, कोई एक single factor responsible नहीं है जिसकी वजह से globalization होता हो. So globalization is not caused by any single factor, but still there is one factor which is mainly responsible, and that is technology. टेक्नोलॉजी रिमेन्स क्रिटिकल. अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, दिस इंटरनेट, ओके, द हाई स्पीड ऑफ दीज शिप्स, द वॉल्यूम दैट दीज शिप्स कैरी टुडे, these things, if these did not exist,
then probably this scale and volume जिसकी हम बात कर रहे हैं, scale and speed, ये तो टेक्नोलॉजी से ही आया है. Okay, so technology of course is responsible, not the only factor but one of the major factors जिसकी वजह से globalization possible हो पाया है. The ability of ideas, capital and communities and people are able to move more freely and easily from one part of the world to another, and this has been mainly made possible by the technological advances. Globalization, however, does not emerge merely because of the availability of improved communications. Okay, what is important is for people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world. इसमें सभी जब पार्टिसिपेट करते हैं, इसको रियलाइज करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं, तब जाके ग्लोबलाइजेशन होता है. Currently we are aware of the fact that events taking place in one part of the world affects the other part of the world, negative or positive. So if corona takes place in China, it travels to the entire world. If a new technology comes up in say internet, obviously it was a technology developed by America, it also travels to other parts of the world. Okay, so whether it's negative or positive, all ideas, all technologies, all events, any event taking place in any part of the world affects the rest of the world as well. Okay, so a single event of a virus going astray in Wuhan in China, and we are seeing the impact of it globally. So if there is some major economic event which takes place in any part of the world, it obviously affects the entire world's economy. Okay, so the impact is felt outside the immediate local, national or regional environment at the global level. So if the American economy goes down, we feel the impact. If our economy goes down, they'll also feel the impact. Of course, it is different that our failure of economy will not have as much impact on their economy, but it's still these things do matter. Okay, because the volume, the size of their economy is much larger. Okay, so equally affect करे एक दूसरे को, ये जरूरी नहीं है, but affect करता है. Now this new thing that we have not started before, that is the political consequences of globalization. ये political consequences क्या है? Let us see इसका politics में, governance में, government पे क्या असर पड़ता है, state पे क्या फर्क पड़ता है, देश पे क्या फर्क पड़ता है, देश की government पे क्या फर्क पड़ता है. Okay, first there was the concept of welfare state. If you understand what this welfare state is, welfare state का मतलब ये है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखें, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर, एवरीथिंग. Okay, so it was the state which was responsible for the welfare of the people, और उसे हम welfare state कहते थे. But आज की डेट में these welfare states are missing. Okay, what has happened is globalization has results in the erosion of a state capacity. एक देश की सरकार कितना डिसीजन ले सकती है, क्या डिसीजन ले सकती है, कितना कंट्रोल कर सकती है, वो इसमें काफ़ी डिफरेंस आया है. इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ओके, तो चाहकर भी बहुत कुछ द गवर्नमेंट कैन नॉट डू. ओके, बिकॉज नाउ दे आर नॉट, दे आर विड्रॉन फ्रॉम लॉट्स ऑफ सर्विसेज. Initially, Indian government, when we became independent, and the Indian government, they controlled every aspect of economy. Hotels by government, railways, roadways, airways, everything controlled by government and only government. There used to be just on roads we used to see only state buses, only railways, only railways. It is still the monopoly of the Indian Railways, but airways, just Indian Airlines and Air India, no other airlines. Okay, as far as companies in the core sector, if we see the coal and everything, every factory, steel factory and everything, most of them were being controlled by the states. Okay, I told you, even hotels, even making TVs, even making everything from scooters to everything, it was the state government which was participating. So they were controlling the entire country, every aspect of
people's lives was controlled by the Indian government. But now, if we see, Indian government is not controlling most of these things. They have disinvested. Everything has been privatized slowly and slowly. So the capacity of the government to control things has reduced. Education, yes, they are controlling one part of the education, that is the public education, that is the state schools, but main education is still in the private hands. So is the case with the healthcare. Okay, so a lot of things they are not controlling, and apart from education and healthcare, they have got a very minimal role. तो उनका बहुत मिनिमलिस्टिक रोल हो गया है, बहुत कम रोल रह गया है इन गवर्नेंस. सो जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट हुआ करता था, जहाँ पर स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट यूज्ड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये खत्म होते जा रहा है. इट इज गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट. ऐसी गवर्नमेंट जो कि बहुत कम काम में उसका रोल रह गया है, केवल कोर फंक्शंस वो करते हैं, मिलिट्री, पुलिस, collection of taxes and all, just those core functions. Okay, they're moving away from rest of the things. States have withdrawn from many of its earlier welfare functions. जो पहले बहुत सारे welfare functions वो करते थे, उससे उन्होंने अपने आप को withdraw कर लिया है. Okay, तो ये consequence है, ये political consequences हैं. ये हुआ क्यों है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो उन्होंने withdraw कर लिया है, तो कौन आ गया है? MNCs have stepped in. Okay, private companies have stepped in, and they are providing those services. So is it good or is it bad? Yes, to some extent it is good. The quality of services have improved, the quality of goods have improved, but sometimes we can say that things have become costlier, and obviously it is not as cheap when the government used to provide them. Okay, so government has moved away from its earlier functions of welfare function जिन्हें हम कहते हैं, उनसे गवर्नमेंट अब दूर हो गई है. उसकी कैपेसिटी अब उतनी नहीं रही है चीज़ों को कंट्रोल करने की, एंड उसमें बहुत हद तक अब रोल है MNCs और बाकी प्राइवेट कंपनीज का. एट द सेम टाइम लेकिन क्या गवर्नमेंट एकदम ही रिड्यूस हो गई है? क्या उसके पास कोई पावर नहीं बचे हैं? बट कुछ एरियाज में गवर्नमेंट का रोल इनफैक्ट इंक्रीज हो गया है. ओके, एंड हाउ? लेट अस सी दैट. Globalization does not always reduce state capacity. Here we are seeing कि state की capacity reduce हुई है, but not always. कुछ cases में state की capacity increase हुई है, and वो हम देखते हैं कि states की power, capacity means their ability to handle things, control करना, their ability to control, उसे कहा गया है capacity. So the primacy of the state continues to be unchallenged basis of political community. स्टेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, खत्म नहीं हो गए. उनकी इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती. पहले उनका रोल जरूर चेंज हो गया है, पर कुछ एरियाज में उनका जो रोल है वो बढ़ गया है. इंडीड इन सम रिस्पेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट. ओके, वो बढ़ा है, हैज इंक्रीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का रोल कुछ एरियाज में बढ़ गया है. विद इनहैंस टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट के पास अब ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड उस ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से दे आर एबल टू रूल बेटर. सो दे एग्जैक्टली नो हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग हाउ मच, एंड इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर देम टू कलेक्ट टैक्सेस देन अर्लियर. ओके, तो कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं देयर रोल हैज़ इंक्रीज्ड. पुलिसिंग, lot of technology they are using, and with the help of that technology they are able to obviously work in a better way. So government का जो working है वो अब पहले से better हो गया है. they are able to rule in a better way, and their capacity कुछ मामलों में कम नहीं हुई है. So with this information, जो information वो gather कर पा रहे हैं, collect कर पा रहे हैं through technology, with this information the state is better able to rule, not less able. उन्हें एग्जैक्टली मालूम है कितने लोग बीमार हैं, किसको क्या बीमारी है, किस पार्ट ऑफ इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, कहाँ वाटर इश्यूज हैं. विद दीज टेक्नोलॉजीज दे आर एबल टू डिटरमिन कि हमें कहाँ पर हेल्प भेजनी है, इन विच एरिया दे आर मोर सिक
people, okay, so they are able to rule in a better way, okay. So states become more powerful than they were earlier as an outcome of new technology, okay. The second consequence, यहाँ पे तीन consequence हम पढ़ेंगे globalization के. The first that we discussed today, that is the political consequence, and then second is economic consequence, and third will be cultural consequence. Economic consequence, you understand, I think there is nothing much and new that we are going to learn here. In economic consequence में हम देखते हैं कि globalization का जो impact है, जो effect है, that is not uniform. Some benefit, okay, some people they benefit a lot because of globalization, but some do not benefit. In fact, उनको नुकसान होता है globalization से. So the effect is not uniform. It's not कि globalization की वजह से सभी को फायदा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. And इसमें भी लोगों के अलग-अलग views हैं. If you ask them कि economic globalization has it been successful, it has been better for the society, people have got different ideas. Okay. Globalization, so what is often called economic globalization, अभी तक हम पढ़ रहे थे political consequences. Globalization बेसिकली इकोनॉमिक सेंस में ही ज़्यादा यूज होता है, बट उस इकोनॉमी में जो होता है उसका इफेक्ट कल्चर पर एंड पॉलिटिक्स पर तो होना ही होना है. So what is often called economic globalization usually involves greater economic flow among different countries of the world. Okay, economy मतलब इंटरकनेक्टेड ऑफ मार्केट्स, सामान, लोग, कैपिटल का फ्लो करना. सम ऑफ दिस इज वॉलंटरी, कुछ तो ये खुद होता है, एंड समटाइम्स इट इज फोर्स्ड. WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू फोर्स मेनी कंट्रीज टू डू थिंग्स दे डोंट वांट टू डू. ओके, तो कई बार कंट्रीज दे आर नॉट विलिंग टू ओपन देयर मार्केट्स, बट दे आर लिटरली फोर्स्ड टू ओपन दोस मार्केट्स. ओके, force does not mean always military force, I'm not talking about, okay, but there were different ways to apply force. Okay, जो हम hard power, soft power जो हम समझते हैं. So some of this is voluntary and some forced by international institutions and powerful countries. ये powerful countries, अमेरिका की बात हो रही है, international institutions में यहाँ पे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे institutions की बात हो रही है. Okay. But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe. Globalization में सामान तो बहुत गया है, okay. Commodities, goods and services have moved from one part of the world to the another part. In fact, the capital has moved a great deal. तो capital का flow बढ़ा है and goods का flow काफी बढ़ा है, but इस डिग्री तक लोगों का फ्लो नहीं बढ़ा है. ओके, लेबर का मूवमेंट उतना पॉसिबल नहीं है. गुड्स ऑब्वियसली कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट व्हेन पीपल मूव बहुत कुछ चेंज होता है, इसीलिए उस पर अभी भी गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है. सो बट ग्लोबलाइजेशन, सो इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू अमेरिका एंड ट्रेडिंग विद अमेरिका, सेलिंग एंड बाइंग फ्रॉम अमेरिका इज मच इजियर than actually physically going to America and working there. उसमें बहुत सारे restrictions हैं, okay, and those restrictions are mainly visa restrictions. But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe. Developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the jobs of their own citizens. अगर बाहर के लोग आ जाएंगे तो फिर उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, उनके लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. दैट इज व्हाई दे हैव टू प्रोटेक्ट. सो एवरी ईयर अमेरिका डिसाइड्स कि कितने लोगों को आने देना है, कितने H1 वीसा इशू करने हैं, कितने स्टूडेंट वीसा इशू करने हैं, कितने वर्क वीसा इशू करने हैं. ओके, सो दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग and limiting the flow of people. Most of the countries, okay, so developed countries have allowed, they are in favor of movement of goods, but when it comes to movement of people, उनके borders काफी हद तक बंद हैं. They are not allowing people from developing countries to move into their country, because then that is going to affect the lives of their very own people. Okay, so global economic globalization has created an intense division of all
ओवर दी वर्ल्ड। तो हम यहाँ देखते हैं लोगों का ओपिनियन क्या है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ओके, ऑल दोस हु आर कंसर्न विद सोशल जस्टिस, इस समाज के लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट हो, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, लोगों का ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है। ऐसे लोगों का मानना है दे वरीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल कॉज्ड बाय द प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उनका मानना है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट्स ने अपने आप को बहुत विड्रॉ कर लिया है, लोगों की ज़रूरतें वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सम पीपल आर कंसर्न अबाउट दी, इसे हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे काम करने बंद कर दिए हैं। इट इज़ लाइकली टू बेनिफिट ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल, और जब प्राइवेट सर्विसेज आ जाएंगी तो कुछ ही लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इम्पॉवरिश हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इम्पॉवरिशिंग दोज हू वर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर जॉब्स एंड वेलफेयर एंड लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जो लोग डिपेंडेंट थे गवर्नमेंट पर, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम करने बंद कर दिए तो उनकी लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। दे एम्फेसाइज द नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, और वो सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करते हैं जहाँ पे लोगों को एक सिक्योरिटी हो कि उसके बच्चे पढ़ सकें, उनकी हेल्थ के केयर किया जा सके, उनके रिटायरमेंट के बाद दे आर एबल टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो इसे हम सोशल सेफ्टी नेट्स कहते हैं। एंड जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे बहुत हैं, दे आर्ग्यू दैट इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। यहाँ से लोगों का फ़ायदा होता है एंड यही फ्यूचर है, और इसको रोकना, ग्लोबलाइजेशन को रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनीवन। ओके, सो ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, ये होना ही है, इसलिए इसको रोकना सही नहीं होगा। जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं, तो हमने दो तरह के सपोर्टर्स देखे, एक जो चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव है और इसमें स्टेट्स ने अपना वेलफेयर स्टेट का जो उसका फंक्शन था वो उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, एंड सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो उन्हें करना चाहिए, ऐसा एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो मार्केट ड्रिवन चीज़ें हैं, जो मार्केट इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, ये ही फ्यूचर है और यही सही है, क्योंकि इसी से दुनिया का प्रोग्रेस हो पाएगा। इन दोनों के बीच में भी एक ओपिनियन है जो कि मॉडरेट ओपिनियन है। मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सामने एक चैलेंज प्रोवाइड किया है, बट इस चैलेंज को हम इंटेलिजेंटली, वी शुड बी एक्सेप्ट दिस इंटेलिजेंटली एंड वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, तो इसे हमें नकारना नहीं है और इसको हमें एज अ चैलेंज लेना है, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट इंटेलिजेंटली। ओके, हाउएवर cannot be denied is the increased momentum towards interdependence and integration between governments, businesses and ordinary people. So that is about the economic globalization। तीन तरह के व्यू हैं, एक कहते हैं बहुत नेगेटिव है, स्टेट्स का काम है ये वेलफेयर फंक्शंस ये करना, सेकंड कहते हैं नहीं, ओपन मार्केट, फ्री ट्रेड यही फ्यूचर है और इसी से ग्रोथ होगी और इसी से लोगों का भला होगा। एंड थर्ड इज मॉडरेट, जहाँ पर वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीज़ें भी हैं, इसने एक चैलेंज पोज किया है और इससे हम इंटेलिजेंटली इससे हम निपट सकते हैं, एंड दिस वी कैन यूज ग्लोबलाइजेशन टू आवर बेनिफिट। ये है थर्ड थिंग। ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे इसके क्या हैं, एंड वी ऑल्सो सॉ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। Now the third consequence is cultural consequence that we'll be discussing in the next class. India and globalization वो हम पढ़ेंगे। Resistance to globalization, हम resist कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या है negative aspects of globalization. India and resistance to globalization. So basically Indian context में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में हम इसको restrict कैसे करना चाह रहे हैं, resistance कैसे करना चाह रहे हैं। Okay, वो part that will be next part, but cultural consequences also we have to study in the next class. So thank you, that's all in this class.
and today we learned about the political and economic consequences of globalization. This is the last chapter in this book. After this chapter, obviously, we'll move to the other book. Okay, thank you.